हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गिरीश चंद्रा। आज मैं अपने चैनल गणित ज्ञान में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आज मैं आज 9th क्लास मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। ये जो नंबर सिस्टम है इसमें बेसिकली कई बच्चों को पता नहीं होता है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। बेसिक कंसेप्ट्स, होल नंबर किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? होल नंबर कहते हैं बेसिकली वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है आपको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है किससे, पता है आप लोगों को? ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। रेशनल नंबर स्टार्ट होता है आपका एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where Q not equal to 0 and P and Q are some integers. What are integers? Integers are all natural numbers with positive and negative sign, and zero. रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं जानते हैं आप लोग? रियल नंबर्स कहते हैं जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रियल नंबर्स। ऑल रेशनल एंड इरेशनल numbers are included in रियल नंबर्स। अब एक चीज़ देखिए आप कि जैसे हमने अभी चर्चा की आपसे कि रेशनल नंबर, तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि रेशनल नंबर आप लोग जानते हैं क्या होता है? रेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है बताइए? रेशनल नंबर होता है जो नंबर हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेशनल नंबर है इट फॉर्म्स two types of decimal. It gives us two types of decimal representation. One is the terminating decimal और दूसरा जानते हैं आप लोग क्या होता है? दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक सवाल आता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? देखिए कोई भी नंबर है जैसे P/Q के फॉर्म में अभी हमने आपसे डिस्कस किया है कि जो रेशनल नंबर है वो आपका P/Q के फॉर्म में होता है। अब ये P/Q के फॉर्म में होता है तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है? तो जैसे मान लिया एक एग्जांपल आप लीजिए, जो सपोज कीजिए कि हमने लिया आपको 13/5। नाउ ये क्या देगा आपको? इसकी वैल्यू होगी 2.6। रिमाइंडर क्या आया इसमें? रिमाइंडर आपका है 0। रिमाइंडर क्या है? 0। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमेशा आपका रिमाइंडर 0 आएगा और डेसिमल के बाद कुछ नंबर आएगा, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखिए दो तरह का होता है। इसमें पहली बात कि जैसा अभी मैंने आपसे कहा है कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका रिमाइंडर है 0, तो इसका रिमाइंडर जो है कभी भी आपका 0 नहीं होगा।
जैसे उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में इसे हम कहते हैं, एक जो टाइप है वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जानते हैं आप लोग ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल? आई थिंक यू डोंट नो। और दूसरा जो होता है रिपीटिंग डेसिमल, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसमें डेसिमल के बाद सम ब्लॉक ऑफ नंबर्स आर रिपीटेड, continuously repeated. So suppose I am taking an example, 10 upon 7. What is the value of 10 upon 7? It will give you, the value of 10 upon 7 is 1.1.42857142857 and so on. Here you see that the repeating block is 428571. So it is represented as 1.428571 and it will be represented in the block. Now another one is non-terminating, non-repeating, non-terminating, non-repeating decimal. अब ये non-terminating, non-repeating decimal is what? How can we show it? See here. Non-terminating, non-repeating decimal, either you represent by some decimal, but the number is not repeated after the decimal. For example, 1.424397 and so on. It can be anything. It can be anything. After the decimal, the block of numbers are not found. No number or block of number is repeated. And the another one, all the number with root sign whose value can't be obtained perfectly. For example, root 3, root 5, root 7 are also non-terminating, non-repeating decimal. Non-terminating, non-repeating decimals. Now we see that now what is real number? Real number is, देखो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये तो अच्छा आ रहा है पीछे से. Real number. What are real numbers? All rational and irrational. All rational and irrational numbers. All rational and irrational numbers. It includes all kinds of. It includes all kind of numbers. It includes integers, whole numbers, rational numbers, irrational numbers, etc. Now addition, subtraction,
multiplication and division of rational numbers with root sign. Numbers with root sign. Suppose that root 3 plus 3 root 3, it will give you 4 root 3. Before root 3, 1 is hidden and 3, so it will give you 4 root 3. Root 3 means 1 root 3. Now, if it is subtraction, suppose that we are adding two different irrational number, for example, root 3 plus 2 root 3. It will be the same itself. Now, suppose that we want to subtract the two irrational numbers. Suppose that 2 root 7 minus 5 root 7. What it gives us? It gives us minus 3 root 7, because the 2 minus 5 will give you minus 3. So we can subtract them easily. But if the roots are different, then we can't the value of these value after subtracting them, because there will be no subtraction between the two dissimilar roots. Now in multiplication, what we see here, 2 root 3 into 3 root 7. What it gives us? 2 and 3, it will multiply to give you 6, and root 3 into root 7 will give you root 21 will be the answer. Suppose that 2 root 3 into 3 root 3. What it gives us? 2 into 3, 6 into root 9. But for root 9, we can get the values 3, so it will be 6 3 is 18. Now in division, how we see it? 4 root 28. 4 root 28 divided by 7 root 7. Now how we get it? 4 root 28 divided by 7 root 7. Now how it gives you? It gives us 4 by 7 into root under 28 by 7. It will give you 4, and now it will be 4 by 7 into, because root 4 square root 4 will give you 2. So the value is 8 upon 7 answer. Stop कर दो.